Okay. So we are going to learn about articles. We have already seen कि article में we know about a, an, and the. Clear? Yes. So a or an is the indefinite article, and the is the definite article. ठीक है? तो a और n indefinite है और the जो है वो definite article है. अभी हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे. मैंने आपको बताया था कि a और n when we use when I don't know about that particular person or thing. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि कोई रैंडम इंसान जा रहा है या रैंडम स्कूल के बारे में बात हो रही है, रैंडम एनिमल के बारे में बात हो रही है, तब मैं उसको डिनोट करने के लिए ए और एन लगाऊंगी. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू टॉक अबाउट द सेम पेट, सेम स्कूल, सेम पर्सन, तो मैं द लगाऊंगी. ओके, लेट्स रीड दिस. रीड इट. दिस वन. Articles are, यही ना? हम्म. Articles are short words which come before nouns to show whether they refer to a general or a specific object. There are several rules telling which article, if any, should be used. Very good. So articles are short words. Clear? I have to break it into few sentences ताकि मुझे पता चले. Now here the word is which is a connector. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये which क्या कनेक्ट कर रहा है, जो कि, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ऐसा वर्ड है जो कि. So articles are short words. Which words? Short words. So this is a kind of a sentence. Articles are short words which come before nouns. So if this is a noun, any noun, thing, place, or name, before it is written articles or short words which come before nouns, right? So I Yes. have to use article before noun, just before noun, to show, to what? To show whether they refer to a general or a specific object. Either it is about a general term, जो कि general है, या फिर कोई specific object है. For example, I'm talking about this pen, this black pen. If I'm saying give me a pen, okay, I have to write it down. Give me a pen. मैंने बोला a pen, that means it is not specific, it is general. In general कोई भी pen दे दो मेरे को. You can give me red pen, you can give me blue pen, you can give me any pen. But if I'm telling you that please give me Parker pen or ball pen, so that is a specific one. Give me the pen that I have given you yesterday. So I'm talking about the pen that I have given you yesterday. जो मैंने कल आपको दिया था वो पेन मांग रही हूँ. So that is the specific pen. कि मैंने specifically बताया कौन सा, तो मैंने द लगाया. Because you also know कि मैं किस पेन के बारे में बात कर रही हूँ. There are several rules. Several means many different rules. Okay. For what? To tell you which article, कौन सी article. Again, it is written comma. So there are several rules telling which article, again, if any, कौन सी article, अगर कोई है, if any, should be used. Okay. Use करनी चाहिए. Now we'll get into the detail. अब हम यहाँ पे देखते हैं this one. See also singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, superlative adjectives. This we will read later on. Singular noun, plural noun मुझे पता है. Singular noun क्या है, plural noun क्या है. Countable, uncountable भी we know. एक basic idea we have कि countable which we can count, uncountable which cannot count, right? For example, if I talk about hair, I cannot count my hair. I cannot count water, right? But I can count pen if it is a specific one. For example, 10, 20 है, I can count. और आगे भी काउंट कर सकते हैं. बट कुछ ऐसी चीजें विच वी कैन नॉट काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल. ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे भी, टॉपिक पे भी. अब अ ग्लास ऑफ वाटर बोलो तो आई कैन काउंट अ ग्लास ऑफ वाटर, अ लीटर ऑफ वाटर, बट मैं ऐसे नहीं काउंट कर सकती. दैट इज स्पेसिफिक वन. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, इन ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे. नाउ सी 63.1 वाला जो टॉपिक है, इनडेफिनेट आर्टिकल. अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल दो टाइप के हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite, definite. So indefinite, definite means a specific one. Definite means a specific, but this is indefinite. Indefinite articles are a,
or N is used to talk about something in general. If you're talking about something in general, then you can use A or N. For example, this guy is here and he has chosen one book. This is the stack of books. This is one rack in which books are there. I work in a library. Where does he work? He works in library. So I work in a library. So I work is what? Subject plus V1. Subject plus V1. Verb का first form है. I work. Yes. Where does he work? If I would say he, because this is the third person for me. मेरे लिए तो तीसरा person है ना. But वो अपने लिए तो अपने लिए first person है. That's why he's saying I work in a library. अब I have to ask about him. अगर मैं आपसे पूछूं इस random boy के बारे में, how will I form a question? Where does he work? He has given his explanation that he works in a library. I would say he and then work का हो जाएगा works in library. No. अब मुझे आर्टिकल की उतनी आइडिया नहीं है तो मैं इन लाइब्रेरी बोलूंगी. नाउ आई नो कि आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आर्टिकल नहीं लगाया तो बहुत बड़ा पाप हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टिल लाइक इट शुड बी कि हाँ मुझे मालूम है, देन आई विल यूज. सो आई ही वर्क्स इन अ लाइब्रेरी. क्लियर? नो कंफ्यूजन? ठीक है. तो आपको क्वेश्चन बनाना भी यहाँ पे आप जानती हैं ऑलरेडी, फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करें. वेयर डज ही वर्क? ही वर्क्स इन अ लाइब्रेरी. ओके, रीड इट अगेन. कौन सा? यही सेम. हाँ, क्वेश्चन एंड Where आंसर. does he Where does he work? He यस, work in a library. ही वर्क्स इन अ लाइब्रेरी. He works in a library. हाँ, और इसने works. इसने क्या बोला अपने बारे में? ये वाला सेंटेंस पढ़िए. I work in I work in a library. वेरी गुड. नाउ रीड दिस एक्सप्लेनेशन अबाउट अ. I is used to talk. क्या लिखा? टॉक अबाउट. Talk about the type of place where somebody works, not the specific buildings. Okay. So A is used to talk about the type of place. Type of place is Place, what? A yes. library where somebody Yes. works. Somebody works. I'm not talking about specific person. I don't know about the person. That's why I said in a library. So that person is talking about in a library. So this place is not specific. This place is in general a library. So not the specific building. He did not say that I work in a British library. तो मुझे लाइब्रेरी का नाम नहीं पता. सो दिस लाइब्रेरी इज इन जनरल. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से कि चिल्ड्रंस प्ले इन पार्क. दिस इज जनरल स्टेटमेंट कि चिल्ड्रंस play in park. But if I would say that children play in green park, so this is specific one, right? That they play in green park. Which park? Specific park, green park. That is different. So they play in the green park. Now, next one is I work in office. So I work in office. अब यहाँ Office. पे मुझे And आर्टिकल पता है तो मैंने क्या यूज किया? I work in an office because I know that office before noun I have to use article, so I work in an office. Clear? N is used instead of A. Before words before that what? start with a vowel. Vowel. O is vowel. Sound is also vowel. Yes. Okay. Yes. Office. So I have to remember about the sound as well. Letter है, but sound भी है कि नहीं वो भी check करना है. So this O is vowel and the sound is also vowel. Clear? Now next sentence is we are trying to buy a house. What are we trying to do? We are trying to buy a house. Read the sentence. ये दोनों पढ़िए. We are trying. यहाँ से. We are trying to buy a house. The अच्छा, Chanda is a Canada. very cold country. Canada. चंदा Sorry. नहीं. हाँ, यहाँ पे CA है. Canada is a very cold country. Okay. So Canada is a very cold country. We are trying to buy a house. Now this is H that is giving you exact consonant sound, and the letter is also consonant H. But if I would say R, HOUR. So what will you use before R? R के पहले क्या use करेंगी आप? A or N? And
And why? और है ना, अस एच साइलेंट है इसमें। वेरी गुड। एच साइलेंट है तो यहाँ पे आर पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, आवर हो रहा है, सिस्टम। इसलिए एन लगाया। अब ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है तो उसमें भी एन लगेगा। एन आएगा। एच साइलेंट हो गया, ऑनेस्ट आ गया। ठीक है, अब मैं कहूँ हम्म, पर्सन, पर्सन के पहले व्हाट विल यू यूज बिफोर पर्सन? आ अ। और यहाँ पे ऑनेस्ट के आगे पर्सन लिखा होता तो यहाँ पे चेंजेस होती? डू यू थिंक दैट आई विल चेंज दिस एन टू ए बिकॉज ऑफ पर्सन? नहीं, व्हाई? गिव मी द क्योंकि रीजन, गिव मी इन इंग्लिश, ट्राई, ट्राई। बिकॉज बिकॉज ऑनेस्ट पर्सन मतलब ऑनेस्ट है। because I have to think about H because this is noun यस and we have यस read right now that we use article just before noun. Okay, so यस I have to यस, focus on the first letter, first word. So फर्स्ट in honest फर्स्ट वर्ड person, एंड साउंड। yeah, first word and first letter and first sound. So here there are two words. Honest is one word, person is another word, यस right? So यस I have to focus on यस honest, not the person, because यस पर्सन hmm, यस because I have to focus on what is the first one and before that noun I have to use article. तो अगर person होता तो मैं उससे पहले लगाती। अब a very good person होता, very good person होता तो मैं very के आगे लगाती। अगर good person यस होता तो good के आगे लगता। ठीक है, clear? Now see what is written here. The exact house they will buy is unknown. So a house, why a house? The exact one, the exact house they will buy is unknown. They will buy. They will buy, you understand, right? Talking about future, talking about future tense. यस So they will buy is बिल्कुल। unknown. You don't know which house you're going to, they are going to buy because there are many houses. One, two, there are many houses. One, two, three, four, five. So they're just looking for it. They just want to check it out, like which house they want to buy. So they are trying to buy a house, but they don't know which house. So the exact house they will buy is unknown. That's why they have used a house. Now, Canada is a very cold country. So country categorizes Canada. So which country? Canada. It's a very cold यस country. And cold यस describes it. So cold is describing about the country. Which यस type of country? Cold country. Okay. And which country? Canada. So I have to focus on very. So before very, I have to use a या very आ cold country, right? कौन सा? यस Yes. Now this one, the indefinite article is used to talk about a general thing. So again, I'm repeating it again and again. That indefinite is A or N. And indefinite is it, we talk about general things. जो कि जनरल बात करते हैं हम, जो सबको कैटेगराइज करके सबको नॉर्मल कॉमन टर्म्स में यूज होता है। ओके, अमंग मेनी ऑफ इट्स टाइप्स, इनके बहुत सारे टाइप्स, उसमें से जो है वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट जनरल थिंग्स, तब हम ए एन यूज करते हैं। द इंडिफरेंट आर्टिकल इज ऑल्सो यूज टू शो अ नाउन बिलोंग्स टू अ ग्रुप और कैटेगरी। ऐसा भी होता है कि जो एक नाउन है जिसके पहले हम लगा रहे हैं वो किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तब भी हम यूज करते हैं। सो इंडिफरेंट आर्टिकल्स ऑल्सो यूज टू शो अ नाउन बिलोंग्स टू अ ग्रुप और कैटेगरी एंड if it is talking about general things among many types. Clear? Indefinite article. Further examples. So read these four sentences. डॉग्स मेक अ ग्रेट फैमिली पेट। Very good. डू यू वांट टू कम टू एन Exhibition. एग्जीबिशन? Hmm. जिम इजंट एन आर्टिस्ट। Very good. इज देयर अ बैंक नियर हेयर? All right. Dogs make a great family pet. Do you want to come to an exhibition? Jim isn't an artist. Is there a bank near here? ठीक है, तो मैं क्या पूछ रही हूँ? Is there a bank near here? Near here पास में यहाँ पे कहीं पे है कोई बैंक? Is there a bank near here? Now again, this is there a bank near here is not present simple. It is to be form. है ना? यस There is a bank near here. तो आंसर कैसे होगा? Yes, there is a bank near here. There के यस बाद comma, there is, because is there का क्या हो जाएगा? We will cross it. There पहले and then is बाद में, auxiliary verb बाद में. Now Jim isn't an artist.
Is Jim an artist? Isn't Jim an artist? Right? Dogs make a great family pet. yes, Do dogs make a great family pet? So what I'll make, yes, do dogs make a great family pet? Because dogs है तो do आएगा. अगर dog होता तो does आता. Does dog make a great family pet? और यहाँ पे dog अगर simple positive में बनाती, dog makes a great family pet. Clear? hmm, Do you want to come to an exhibition? Does she want to come to an exhibition? Does he wants to नहीं होगा. Does he want to come to an yes, exhibition? Because do or does जब हम लगाते हैं, then we use V1 form, right? yes, Simply yes, सिर्फ positive affirmative sentence में we use subject plus V1 or V5. So yes, V5 again according to the third person singular. This one is clear. Next one is some. So where do we use some? Some places. Some replaces a or n in sentences with plural nouns. जब हम plural nouns की बात करते हैं तब जो है यहाँ पे some को replace किया जाता है. Some replaces a और n in a sentences with plural nouns. Okay. किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, we replace a और n with some. कहीं कहीं हम some से जो है a और n को हटा के some यूज करते हैं. For example, this one. Read these two. there is a hotel in the town. Next one. There are some hotels in the town. Good. Now see this one. मैं उसको बताने से पहले ये दिखाती हूँ, ठीक है. Here it is written Jim is an artist. We also know that artist के आगे n क्यों लगा, because artist is a noun. A का sound is Yes, vowel sound. That's why we have used n. A bank क्यों, because B is consonant. ठीक है, यहाँ पे तो बात ही खत्म. The indefinite article is used in the same way for negative statements. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट हो, n लगा है तो इंडेफिनिट जो a और n है, it is going to be yes, used in the same way जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं. Do you want to come to an exhibition? Again, an exhibition. So it is used in the same way for questions also. So it doesn't matter which types of sentences you are making. Is it positive? Is it negative? Interrogative? और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क, आपका ए और एन चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही लगेगा जैसे आप पॉजिटिव में लगा रहे हैं. नाउ यू हैव सेड दैट कि ठीक है, देयर इज अ होटल इन द टाउन. सो देयर इज अ होटल इन द टाउन. सो दिस इज क्या बता रहा है, सिंगुलर है तभी इज लगा, इसलिए अ yes, होटल इन द टाउन. बट आई एम सेइंग देयर आर. अब देयर आर है, एक से ज्यादा हो गया तो ए और एन तो हम लगा नहीं yes, सकते, यहाँ तो गलत हो जाएगा ये रूल. सो देयर आर सम होटल्स इन द टाउन, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी होटल्स आर देयर. अब टाउन में कितने होटल्स हैं, आई कैन नॉट इवन काउंट. मुझे ये पूरा सर्वे yes, करना पड़ेगा एंड देन आई विल नो उस टाउन में कितने सारे अलग अलग लोकेलिटीज हैं या गली हैं. इसलिए यहाँ पे देर आर सम होटल्स इन द टाउन. सो होटल्स इज प्लूरल, होटल इज सिंगुलर. क्लियर? यहाँ पे आपको दोनों चीज समझ में आ गया. यूज ए और hmm, एन टू टॉक अबाउट वन थिंग. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, सिंगल थिंग, यू हैव टू यूज ए और एन. एन एप्पल, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एक एप्पल. अब आप मुझे बात करनी है एक से ज्यादा, 1 किलो के बारे में. अब आई विल से दैट ओके 1 kg एप्पल. yes, क्योंकि वहां पे 1 है, 2 आएगा तो 2 hmm, kg हो जाएगा. अब वहां पे मैं 2 kg के लिए नहीं लगा सकती, अ केजी बोल सकती हूँ, अ किलोग्राम, लेकिन पर यूनिट के लिए यूज कर सकते हैं. बट एक से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे सम से रिप्लेस हो गया. सो यूज सम टू टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग देन यूज सम instead of using a. Clear? Next is further examples. There are some banks on Main Street. So there are some banks, क्योंकि there जो है मेरा यहाँ पे एक से ज्यादा की बातें हो रही है. So more than one thing that you have to use some banks. ठीक है? There is a bank on Main Street. So there is a bank on Main Street. मैं a bank लगाऊंगी, but there are है with some banks. There are some children in the park. Okay? You can see there are some children in the park. This is park. park, There are 2 trees in the park. हम ऐसा बोल सकते हैं ना, अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं पिक्चर देख के. So we will also do picture वाला चीज, that pictures को देख के how we will make sentences, we will also do that. Now next is some and any with questions and negatives. So some and any with questions and negatives. For example, some is replaced by any to form questions and negatives. मैंने एक मिनट some, रुकिए. yeah, हेलो, ध्यान भी नहीं रहा. ठीक है. some and any with questions and negatives. Okay, तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि if anything or any person, कुछ भी है, if it is more than one, I have to replace a और n with some. हमने replace कर दिया a और n को some से, वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमने यूज किया. नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट क्वेश्चन और नेगेटिव, मुझे क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव बनाना है,
सम एंड एनी कैसे बनाएंगे यूज करके? सम इज रिप्लेस्ड बाय एनी। अब सम जो मैंने यूज किया था ऊपर में, उसको रिप्लेस कर देंगे हम एनी से, टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। देयर आर सम कैफेज इन द टाउन। आर देयर एनी कैफेज इन द टाउन? क्लियर? मैंने बोला देयर आर सम कैफेज इन द टाउन। अब मैं क्वेश्चन पूछी तो मैं ऐसे ही पूछूंगी ना कि क्या यहाँ पे कोई टाउन है, टाउन में कोई कैफे है? अगर मेरे को कहना है कि टाउन में बहुत सारे कैफे हैं, तो तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना कि हाँ इस टाउन में बहुत सारे कैफे हैं। तो उस बहुत सारे के लिए मैंने बोला कि बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ कैफेज हैं, सम कुछ। तो आई हैव सेड दैट सम कैफेज इन द टाउन, तो कुछ कैफेज इन द टाउन, मतलब टाउन में है। बट आई एम सेइंग दैट कि आई एम आस्किंग क्वेश्चंस कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ, डू यू नो दैट आर देयर एनी कैफेज इन द टाउन? यू सेड यस देयर आर सम कैफेज इन द टाउन। तो आपने इसको आंसर में यस देयर आर सम कैफेज इन द टाउन। नाउ देयर आरंट एनी चिल्ड्रन इन द पार्क, सो देयर आर सम चिल्ड्रन इन द पार्क, देयर आरंट एनी चिल्ड्रन इन द पार्क। ओके, देयर इज नो बडी इन द क्लासरूम। अब हमें मुझे कहना है कि देयर इज लगा के, तो मैं बोलूंगी नो बडी, मतलब कोई नहीं है क्लास में, देयर इज नो बडी इन द क्लास। ओके, तो मैं इन द क्लास क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ किस क्लास के बारे में बात कर रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो जान रहा है कि इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात की जा रही है, इससे देयर इज नोबडी इन द क्लास। बट यहाँ पे क्या है, सम और एनी को चेंज किया गया। क्लियर? ना फॉर द एग्जाम्पल ये चारों आप पढ़िए। एक मिनट होल्ड करूं, बेल हाँ बज रही थी मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आप ये चारों सेंटेंसेस पढ़िए, रीड ऑल दीज फोर सेंटेंसेस। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से और स्टेटमेंट को स्टेटमेंट की तरह से। ओके, so are there any museums? There aren't any parks. Are there any swimming pools? There aren't any factories. Unmute yourself, you're on mute. Yeah. Are there any museum? There Museum. are there aren't any parks. Parks. Are there any swimming pools? There aren't any Factories. factories. Okay, repeat after me. Are there any museums? Are there any museums? There There aren't aren't any parks. any parks. Are there Are any there swimming any pools? swimming Are there any swimming pools? There aren't any factories. There aren't any factories. There aren't any factories. Very good. Clear? पता चल गया ना अभी? इंडेफिनिट क्लियर हो गया? इंडेफिनिट में ए और एन लगाते हैं। Now comes to definite article. So definite article is talking about the. So the is used to talk about a specific person or specific thing that everyone understands. किसी specific चीज के बारे में या फिर किसी specific person के बारे में when we talk, then it is all about the article the. We will use the article. So the article definite article में आता है. So we went on a tour and the guide was excellent. We went on a tour. tour पे हम लोग गए and the guide was excellent. So among these the guide was excellent. ये जो guide है. So it is clear from the context that this means the tour guide. ठीक है? अब इस context से क्या पता चल रहा है सेंटेंस से कि we went where? We went on a tour. अब यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि on लगा रहा है, ठीक है, tour के आगे Yes. and लगा के मैंने फिर Yes. बोला the guide was excellent. So who was excellent? The guide was excellent. So इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये तो समझ में आ गया कि the is used for guide and it is clear from the context that this means the tour guide. यहाँ पे सिर्फ गाइड लिखा है और हम कहाँ गए थे? टूर पे। टूर पे टूर गाइड के बारे में बात हो रही है, तो स्पेसिफिक वन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन और थिंग हैज बीन मेंशन्ड ऑलरेडी। अब मैंने बताया था कि अगर मैं कहती हूँ कि आई सॉ अ कैट, द कैट वॉज वेरी नॉटी। I saw a cat, the cat was very naughty. तो मैंने बोला अ कैट, मैंने एक कैट को देखा और वो कैट बहुत नॉटी थी, तो द कैट वॉज वेरी नॉटी। एंड अगेन आई यूज्ड आई सॉ अ कैट, दिस इज सिंपल पास्ट एंड दिस इज टू बी फॉर्म में सिंपल पास्ट, ठीक है। सो आई सॉ अ कैट। अब इसी कैट को मुझे बताना है फिर से, तो मैं इसको द कैट लगा के बोली,
तो अब ये स्पेसिफिक हो गया. सो व्हेन अ पर्सन और थिंग हैज बीन मेंशन ऑलरेडी, अगर किसी पर्सन और थिंग को यू हैव ऑलरेडी मेंशन इन द सेंटेंस और इन योर कन्वर्सेशन, हम दोनों बात करें, आपने किसी पर्टिकुलर रैंडम चीज के बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है, उसी चीज को बाद में बताने के लिए यू कैन यूज द. So the is used to use the next time the thing or the person is talked about. There is a bus trip or a lecture. I would prefer the bus trip. There's a bus trip or a lecture. So यहाँ पे पूछा जा रहा है there is a bus trip or a lecture. मैंने और बताया था या, right? And के लिए और कहते हैं. And आया तो include करेंगे, और आया तो इस दोनों में से कोई एक. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? There is a bus trip or a lecture. तो a bus trip, random bus trip, random lecture. Which will you prefer? I would prefer the bus trip. अब ऑलरेडी अ बस ट्रिप के बारे में बात हो चुकी है, अ लेक्चर के बारे में बात हो चुकी है. देन आई वुड से दैट आई वुड प्रेफर द बस ट्रिप. द बस ट्रिप हैज Yeah. ऑलरेडी मेंशनड, हैज बीन मेंशनड, राइट? हैज ऑलरेडी बीन मेंशनड इन द सेंटेंस. एनी डाउट? No. Okay. All right, we will do this till this page only, and specify जो कहते हैं वो हम कल करेंगे. ठीक है. So next sentence is the Colosseum is probably the most famous site in Rome. So this is superlative phrase, most famous. ठीक है. This is superlative degree हम पढ़ेंगे, most, better, best ऐसा. So the definite article is used before superlatives. तो ये before superlatives है ना, the most, the best. जैसे बोलते हैं ना you are the best. तो यहाँ पे the best है, तो best क्या superlative degree में आता है, तो best के आगे the लगा, ऐसे ही most के आगे the लगा. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे famous के आगे नहीं लगाएंगे the famous, most, the famous नहीं, the most famous site in the room. Clear? The definite article is also used with unique objects. अब कोई unique objects है, उसके आगे भी हम the लगाते हैं. I'm going to the Trevi fountain before I leave. So this book is from I think ये outside India का book है. So all the sentences and places are जो है ये फॉरेन का प्लेसेस है. ठीक है. तो अब ट्रेवी फाउंटेन जो है ये भी कहीं बाहर की जगह पे है. सो आई एम गोइंग टू द ट्रेवी फाउंटेन बिफोर आई लीव. अभी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, राइट? उसमें आपने देखा कि जितने नेचुरल प्लेसेस होते हैं, लैंडमार्क्स होते हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, वी यूज Yes. द इन फ्रंट ऑफ देम. ईदर इट इज रिवर, ओशियन, सीज, और एनी प्लेसेस लाइक डेजर्ट्स एंड ऑल. द सहारा डेजर्ट, the Gobi Desert, the Amazon River, the Nile River. So the Trevi Fountain before I leave. So there is only one Trevi Fountain. अब ये यूनिक है इसीलिए एक ही पीस है, इसीलिए मैंने द लगाया. क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंसेस इट इज ऑल्सो यूज फॉर पीपल विथ यूनिक टाइटल्स. अब किसी पीपल का टाइटल ही यूनिक है, देन वी विल यूज. फॉर एग्जांपल द पोप इज विजिटिंग अनदर कंट्री दिस वीक. सो द पोप इज अ टाइटल. पोप एक टाइटल है एंड दिस टाइटल इज यूनिक, इसीलिए यहाँ पे द लगा. ना फर्दर एग्जाम्पल में ये कुछ सेंटेंसेस हैं, प्लीज रीड इट. I want to Paris and नहीं, यहाँ से यू वेंट टू, ये ये आपने यहाँ से मैंने दोनों. व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? yes पढ़ो. रिपीट आफ्टर मी, मैं बोलती हूँ, आप साथ में पढ़िए. ठीक है. व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? What is the biggest country in the world? I never take the first train to walk in the morning. I never take the first train to walk in In the the morning. morning. I love this In the restaurant. morning. I love this restaurant. I love this. I love this restaurant. The waiters are great. The waiters are great. I went to Paris and climbed the Eiffel Tower. I went to Paris and climbed the Eiffel Tower. Eiffel Tower. हाँ, the Eiffel Tower. ठीक है. Did you buy those shoes from the shoe shop on Broadland? Did you हाँ, did you buy those buy shoes those shoes from the shoe shop on Broadland? The Broadland. president will be speaking on TV tonight. The president. The president. The president. President. तू बैठ गया. The president. The president will be speaking on TV tonight. ठीक है. So we have done till 170. From tomorrow we will see using the to specify. हम specify करने के लिए क्या करते हैं, the को ये हम लोग करेंगे. And then zero article भी देखेंगे where we use zero article with adjectives or certain groups. So this is just to know basic things.
अभी आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स, तो इससे क्या हो रहा है हमारा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड देन वी विल सी दी माइंड